Hi, so welcome everyone in another session under the series Early Edge Young Professionals. And in this particular session, we are going to discuss about what are case competitions, why are exactly case competitions organized, what is the right way to approach case competition, how does the influx of case competitions look like across year. We will discuss a lot of things around case competition, and it could be a possibility that you would find some of the things very much repetitive at some point in time because we have sort of talked about these things in other sessions. So yes, we have had a touch base upon certain topics, but this when we have to discuss about case competitions, I personally want to discuss the whole topic in totality. So if you feel that yes, there are one or two things that are being repeated from some of the other sessions, so just ignore that part and just focus upon how it is fitting in like a piece of a puzzle, right? So let us start with the session. And firstly, let me just talk about you might know, obviously, what is a case competition, but still, just to set the base outright, that what is a case competition? It is basically a business problem solving challenge where a company presents the participants with a real or a simulated business situation, right? But nowadays, mostly the business problems that are presented to you are real business problem that a company is facing, right? So usually the strategy they would be expecting out of you will be solving a real business problem that the company had already faced or is facing, or a project that the company is planning to take up, and they would want a bunch of ideas to sort of give them a head start in terms of strategizing what they can go ahead with. So what companies look for, right? So firstly, company always look for a structured thinking, right? If you're building upon a problem statement, you should always have a knack of structured thinking. You should always think along what should be the right structure when I'm presenting my solution. And obviously, people who have been associated with EEYP would know that we have already had a separate session on how opinion building and structured thinking work. Right. So it is basically how you break down ambiguity into a structured problem statement that eventually leads to very good strategies. Going ahead, it is about business judgment, right? So you have to prioritize and make trade-offs. And how many of you remember that these were the exact nomenclature that were used in my opinion building session as well? Do you remember these words like trade-off, prioritization? Do you remember all of these words when we were talking about thinking levers? We discussed about these aspects, right? So that is what I am saying. Everything that we discuss, no, it is somewhat interlinked. And eventually it is about making up a habit. When I am talking about ki this is required in case competition, is it only required in case competition? The answer is no. Structured thinking, business judgment, it is required even in your classroom, it is required even in your GDs. But case competition provides you an ecosystem, as some of you rightly mentioned in the previous discussion that we were having before going live, that yes, case competition provides you a platform to practice these attributes that can help you out in other dynamics. But yes, it will give you an ecosystem to practice them day in, day out. The more you participate, the more you sort of go into that grill, the more you nurture these skill sets, right? Then third and the most important part is the communication ability. And now when I talk about communication, it is not just verbal communication, it is also written communication. And when I talk about written, it is also the PPTs that you create. Because again, before you go and present in the second last or the final round, your PPT will go to the company and your PPT will talk about the idea that you are planning to present, right? So your PPT should communicate whatever was there in your mind, whatever you plan to structure around, whatever strategies you were building upon. If your PPT is not communicating the same thing, no, then in your mind you would think that I have done a brilliant job, but company does not know, or that particular organization does not know what XYZ person has thought of, right? Then the last part is about execution under constraints, right? So how do you perform with limited time and information? And why do I talk about limited time? Am I only talking about the timelines and deadlines given by the
case comp organizers, what do you think? Is it just that? Is it just the timelines that are given to you by the case comp organizers or any company? The answer is clearly no. When I talk about constraints, it is a lot of things. When you join a B school, you would have to attend classes, you have to go for guest lectures. You have, if you are a part of club and committee, you have to devote your time there as well. Then you have to do your assignments also. If you have a midterm at that particular point in time, you have to prepare for your exams also. And again, along with that, you have to prepare for these case submissions also. Can you tell me what is the easiest way out? Please write in the chat box. What do you think can be the easiest way out in this particular situation? Anyone would want to mention what could be the easiest way out? Like what could be the easiest way out in terms of dealing with these constraints? See, all of this, whatever you are saying, time management, etc., planning efficiently, all of these looks very fancy in chat box, but I'll be very honest, I have seen juniors, I have seen my batchmates also. The easiest way out that a person finds it's to quit. And this is the reality. When you are bombarded with a lot of things, no. And when you see that case competition is something that is not a mandate for me, right? It is something if I do, it is good. If I don't do, no one will come and shout at my head ki why you have not done this, why this is not done, right? So it will be the first and the most easiest thing that you will quit out of the bucket that you have. And that is the first step you are taking towards what I will not say it will be a wrong step, but definitely you would realize in your second year that that was something you should have balanced out. You can obviously prioritize. Don't participate in all the case competition. Like if I talk about myself, did I participated all the case competitions? The answer is no. I had certain defined companies, certain defined case competitions in my mind. It can come from a lot of things. What is the opportunity that company is going to offer? What is the role that company is going to offer? If you want, what is the CTC that company is going to offer after I get a PPO? Right. So you can make a framework in your mind that these are certain parameters I will decide upon whether I have to participate in the case competition or not. But after you have decided, please go all in because the result, if you even become a finalist, if you even get a PPI from a single company and you like literally back that PPI, everything that you have done is literally worth it. Right. So, Achal, as you sort of said that, yes, this is true, and I have seen this happening, and you all will also see this happening. That as soon as you are bombarded with a lot of things, the first thing that you will quit is doing case competitions. And second thing that you would do is wait for the right time. I'll tell you how it will happen. Firstly, you will be like, yeah, let me firstly focus on my summers, let me get placed, then I will focus on my case competition. या तो आप बहुत जल्दी प्लेस हो जाओगे या फिर you will be in that loop of sitting in interviews, getting rejected, sitting in interviews, getting rejected, right? I am assuming all of you are very talented. You will fall in first category only. Then the second mistake people do is that ठीक है भाई अब तो place हो गए sorted है now why do we need to care about a case competition? Now let us chill, now let us enjoy. This is the second mistake you will make. Right. So there is no right time of participate in case competition. If there had been a right time, it was tomorrow. So you are already late. So please start participating as soon as you find a good case competition coming in. Right. So going to the next slide. So this is something that I won't say this is an exhaustive list. And again, I would say that this is an indicative list of case competitions that were held last year. Months may change this year. हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए. Colgate Inner Circle is already there. HUL Foundation School is already there. RPG is already there. We are expecting TAS may come, may not come. If it may come in June also. So this is just an indicative list. But what
I am trying to tell is that ऐसा नहीं होगा कि there will be a month where you will have just time to participate and there will be no new case com coming into play. Right. Every month, a bunch of good case comps will be launched, and you have to sort of enroll in those case competition, and then you have to focus on them also. So please don't procrastinate in terms of कि ठीक है भाई, let me have a month where we don't have any new case competition coming in, and I will just focus on the case competition I have registered in. As soon as you register in a case competition, start thinking around it. As soon as you get a case, don't wait for the time deadline to come up, right? You, as soon as you receive a case, start going through the case, start identifying what is the problem statement, right? And as I said, this is an indicative list of last year. So this year, months may change, right? Okay, so this was the discussion that we were having, that we are a lot into this buzz key case competitions are very important, we have to do etc etc, but what exactly case competition has to offer, right? Apart from skill building, everything that is very good, but if I have to be completely materialistic, if I have to be completely transactional कि भाई मेरा फायदा क्या होगा on paper, let just tell me that. These are the major aspects that will be there. Case comps common for all or some. So, see, I'll be very honest that a lot of case competition has specific B schools for which they open, but these B schools also change every year. For example, if XYZ B school was a part of a case com last year, it might be a part this year, it might not be a part this year. So every year this list is revised, but more or less, it remains the same. A few changes might be there, but yes, as you asked, if I talk about good case competitions, they have a specific list of B schools uh, that they offer the opportunity to. So obviously सबके लिए open नहीं होता, but we have to focus on case competition जो हमारे B school के लिए open हो रहे हैं. We don't have to worry around कि what are the case competitions coming live and like why are we not eligible for these. If you are going into a decent B school, you will have ample of opportunities. So just focus on them. That is what I can say. Right. So, what is the first benefit? Early resume signal before most peer build theirs. Right. This is something we discussed in a profile building session also, that how case competition can literally revamp your CV and revamp in a very positive sense. Then you obviously get PPI, PPO opportunities through strong performance. If you are a podium finisher, if you are a finalist, you will obviously get a PPI. And if you have prepared well, you will convert that PPI, right? Then alternate hiring channel beyond your campus placement. This was something that was mentioned by someone in the same session only, that if you are someone who wants to get a specific job role or a specific company, and if you see a case competition can give you that, then it is literally the best thing, because we can't rely on placement team की वो हमारी पसंद की कंपनी भी लाएगी, हमारी पसंद का रोल भी लाएगी और हमारी पसंद का सीटीसी भी लाएगी. Their job is to get the whole batch placed, and obviously they try their best to bring in new companies, bring in good companies. They do their bit, but if you want to do something on your own, and if you are not a one who is just cursing placement committee की ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, इनसे ये भी नहीं हो रहा भाई, ठीक है उनसे नहीं हो रहा, you try your bit ना. You are getting equal opportunity to participate in case competition, clear at least one or two case comps, get that PPI now. Why are you just dependent on the placement team when you have a equal opportunity to do something on your own? Then access to firms that may not visit your campus, and this is very important. See, if you are going into Blackie and all those colleges, then obviously most of the companies will come to your campus. But even if you drop down one tier, then there could be a lot of companies that don't visit your campus directly, but will float their case comps in your college, right? For example, if you are into any of the tier 1.5-ish college, there could be a possibility कि Amazon directly visit ना करे, but Amazon ACE के through you are eligible to participate in that. And every year people from these colleges definitely go in these companies. But what is the way out? The way is to participate in case competition and get that opportunity, right? So till now, are we on the same page? Are we attentive enough to understand, and like, do we agree with whatever is being discussed? Yes, no, very quickly. Perfect. Great. Great. Thank you. Right.
So, see, the last slide was very much generic, very much gyanbazi. And if I would have been in your place, I would have definitely written yes in the chat box, but I would have thought कि भाई ये ज्ञान तो अपने को पता है, मतलब this is not something that is very what should I say, very new to us, right? So I have brought you literal legit cases from our last year's cohort that have very different stories but eventually same results, right? One story is the early mover. So they started participating in early case competition like from May, June only. And even before entering the B school, they were having the opportunity. So not sure, I should not say even before entering because the result came after they entered the B school. But technically, even before their प्लेसमेंट साइकिल began, they were placed, right? So timelines थोड़ा इधर उधर हो सकता है, but they were very much sure that yes we will get a PPI, and before their placement week begin उससे एक महीने पहले तो they were literally placed, right? Second is the summer comeback. How many of you feel कि यार हो सकता है समर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए? प्लीज कोई यस मत लिखना बिकॉज ऐसा नहीं होगा. ऑल ऑफ यू विल गेट इनटू वेरी गुड कंपनीज बिकॉज आपने अभी से ही चीजों को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट? सो यू ऑल आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड माइंडसेट, यू आर गोइंग टू जॉइन अ बी स्कूल इन अ वेरी गुड माइंडसेट. सो प्लीज डोंट बी इन दैट थिंक कि समर कैसा होगा, अच्छा होगा सबका, राइट? बट स्टिल हमने कल डिस्कस भी करा था इन द लास्ट सेशन दैट लक का थोड़ा सा तो फैक्टर रहता है, राइट? सो यू हैव डन एवरीथिंग राइट, बट इफ लक डज नॉट प्लेस वेल, you have a good profile, you have a decent profile, you have prepared well, but still वो click नहीं हो रहा है and you are sort of not able to get placed into a very good summers, but you got a decent summers, right? लेकिन you are doing your case comps constantly, and this is a legit case, this is the legit case that I have seen literally in my last year's cohort, right? And that particular person got a PPI from Flipkart, wired, converted that PPI, have a PPO now, will be joining Flipkart in June this year, right? And CTC is roughly 33 something, right? It is literally equal to the highest CTC offered by the campus, right? So आप समझो कि जहाँ पे the person was struggling to get a average SIP, now the person has literally the highest placement, and obviously it is not through the placement week and everything, right? And then second thing is the smart hedge. So this was the category I was talking about. और इस category में आप में से बहुत लोग हो सकते हो because you will be going into good companies. You will be having very good summers, right? So don't get into that mindset कि ठीक है now my summers is sorted. I will go into my summers and I will get that PPO, right? Getting a PPO is a much more luck dependent than getting a SIP in your placement process क्योंकि PPO के अंदर तो luck का factor बहुत ही ज्यादा आ जाता है. You will realize this once you go to a company while your summer internships, right? So what you should do is that as soon as you are sorted with your summer placements, please actively participate in case competitions because now you don't have a lot of things to focus upon. Get a good team, tab tak hai, get a good team, get that understanding of how to clear the quiz round, how to be into the first or second round, and then try to work very hard to sort of push yourself to the final rounds, right? And this has also had happened from with someone from our last batch. ठीक है, अब प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट. आप में से किसको किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहानी भी बना सकते हैं, मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि 100% वी कैन ट्रस्ट अपॉन दिस, मतलब ये भी है तो कहानी ही, सो दिस कैन ऑल्सो बी मेड अप, मतलब एंड प्लीज बी ऑनेस्ट, ऐसा किसी को भी लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो लगना चाहिए शायद, मे बी नॉट, ठीक है. मार्क, दैट वाज वेरी ऑनेस्ट आंसर. एनीवन एल्स हु वुड वांट टू pitch in and give their opinion? ठीक है, cool, thank you. So if not that, I have brought you literal screenshots of those people coming in and telling that hey हो गया भाई, PPO हो गया, फाइनल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया. ठीक है, अब भी अगर किसी को लग रहा है कि भाई स्क्रीनशॉट भी फर्ज कर सकते हैं तो भाई देन यू
be a part of the course. These people will be coming on board as mentors. Flipkart से आएंगे डॉक्टर रेड्डी, everyone will be coming on board as mentors. Then you can interact with them, then you can hear out their stories. इससे ज्यादा I could have not done anything to show you कि these stories are real. People have literally cracked case comps and got something that is very different from the reality that they were facing before that, right? So I just wanted to make this point कि जो आप सुनते हो ना वो सच में होता है. दिस इज नॉट जस्ट अ जेनरिक ज्ञान कि आपको अच्छा पीपीओ मिल जाएगा, समर्स अच्छी नहीं हुई तो फाइनल्स आपकी अच्छी हो सकती है, यू विल गेट गुड सीवी पॉइंटर्स. दिस इज जेन्युइन रियलिटी एंड एवरी ईयर विनर्स एंड फाइनलिस्ट गो थ्रू दिस रियलिटी. सो प्लीज ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस रियलिटी, राइट? Now, are we on the same page? Shall we go ahead? Please be very quick with your responses. ठीक है, cool. Now, हो गया, समझ आ गया भाई. This was good enough to understand why case comps are important in everything. ठीक है, we are on the same page now. Now, come to the main part and tell that भाई, what does the winning team do better here? What is the right strategy to go ahead with? So I'll keep it very crisp, sorry. As soon as you get a case problem, no, define the problem very accurately, right? This should be the first step always, that define the problem very accurately. If you are not having a crisp understanding of what the problem is asking from you, then wahi hoga, you will give a solution that is not aligned with the problem statement, and that is the biggest mistake one can do. Then identify the most important drivers very fast, right? The key problem statement samajh aa gaya, then what are the drivers that is leading to this problem, right? Before solving a problem aapko pata hona chahiye why is that problem even existing, right? So second step always should be to identify the drivers, then focus on fewer but stronger recommendations. Now, when you have identified कि ठीक है, there are these five specific drivers that are leading to this particular problem, please don't focus upon all the drivers. Pick and choose one or two drivers that you feel are more impactful. That can, if these two drivers are mitigated in some aspect, the problem can be nudged down at a very massive scale, right? तो प्लीज प्रायोरिटाइज वही जो हमने बोला था कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ्स करने पड़ेंगे. दिस इज द एग्जैक्ट स्टेज वेयर यू डू दोस ट्रेड ऑफ्स. Please don't build a deck around all the problems that you identified and all the solutions you have around them. Choose a specific problem. Then connect ideas to implementation. ठीक है, किसी को भी ना वो ऐसा ज्ञान नहीं पसंद जो बस पीपीटी तक सीमित रहे, राइट? If you are giving some solution, give the solution in complete sense. What do I mean by complete sense? Sorry. While giving a solution, also tell how is that solution can be implemented. What could be the right plan of action? What if you are talking about a GTM, talk about what would be the right GTM. And also talk about the plan of action, how this solution can be implemented. देन मेंटेन अ क्लियर परसुएसिव स्टोरी थ्रू आउट द डेक. आपका डेक ना फ्रेगमेंटेड नहीं लगना चाहिए कि मेरा रिसर्च अलग दिख रहा है, मेरा स्ट्रैटेजी सपोर्ट अलग दिख रहा है, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन प्लान अलग दिख रहा है, एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस अलग दिख रहा है. इट शुड फॉल एज अ कंप्लीट स्टोरी. योर डेक शुड लुक लाइक अ कंप्लीट स्टोरी, राइट? एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. आपको जब दूसरे तीसरे राउंड में हो गया ना, यू विल बी एक्सपेक्टेड टू गिव अ 3 or a 4 slider deck. Then if you clear that round, you will be expected to give a 10 slider deck, right? So आपका story should be cohesive in the 3 slider deck also, and in the 4 slider deck also. It should build upon the same story, right? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 slider deck में तो कुछ और बात करी थी, and now because you have to expand upon it, so now you are building upon a totally different story, right? मतलब, are we on the same page? Shall we move to the next slide? Cool. So now I will talk about what is the right way to approach a case. So again, this is a build up on the last slide. So yes, some pointers could be repetitive. So first step will be understand the problem. What exactly is the company asking, right? अपना biasness नहीं होना चाहिए उसमें. आपके हिसाब से प्रॉब्लम क्या है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. कंपनी के हिसाब से प्रॉब्लम क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. व्हाट कंपनी इज सीइंग एज द प्रॉब्लम,
राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल निव्या ने कोई केस कंपटीशन दिया, अब ऐसा नहीं है कि आपको उसके प्रोडक्ट में जो कमी लग रही है आप उस पे सोल्यूशन बनाने लग रहे हो, उनके हिसाब से उनके प्रोडक्ट में जो कमी है उसके अराउंड द सोल्यूशन गो शुड बी बिल्ट, राइट। देन व्हाट आउटकम आर दे ट्राइंग टू अचीव, और व्हाट आउटकम आर दे ट्राइंग टू एक्सपेक्ट, राइट। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। वेरी सिंपल, मेरा सेल्स डाउन जा रहा है, अब सेल्स डाउन जाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मेरे प्रॉब्लम में, मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरा मार्केटिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है, पीपल डोंट नो अबाउट माई ब्रांड अलॉट, हो सकता है माई प्राइस पॉइंट इज वेरी एक्सपेंसिव देन माई कॉम्पिटिटर, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैज टॉक्ड अबाउट, राइट। सो अब आप समझो, उस केस को पढ़ के एनालाइज करो कि कंपनी किस तरफ फोकस करना चाह रही है, और कंपनी वो हिंट्स ड्रॉप करेगी अपने केस में। कंपनी आपको कभी ऐसा ओपन एंडेड केस नहीं देगी कि देख लो भाई अपने हिसाब से बना के दे दो जो सही लगे, नो, इट विल नेवर हैपन। आपको वो हिंट्स समझने पड़ेंगे, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस what exactly company is trying to achieve and how it will be aligned to the problems that you have identified. Second is diagnose the issue, right? What could be causing the problem? What information matters the most? And as soon as you realize what information matters the most, उस पार्ट से ही आपका रिसर्च बिल्डिंग शुरू होगा। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट जब लोग रिसर्च वाली क्लास अटेंड करते हैं ना, उनको समझ आ जाता है अच्छा भाई दो तीन चीजें करनी है, ये कर देते हैं हर केस कॉम्प में, जाके गूगल फॉर्म फ्लोट कर दिया, कुछ इंटरव्यूज ले लिए, और उनको लगता है दिस इज द राइट। भाई प्लीज अंडरस्टैंड what exact information matters to support your case or to support your strategies that you are trying to build, then do that sort of analysis। मतलब गूगल फॉर्म फ्लोट कर दिया है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं गूगल फॉर्म फॉर्म के अंदर वो अलाइंड ही नहीं है बिजनेस प्रॉब्लम से। इट इज जो आपको अब डेटा आएगा एज अ आउटपुट, आप क्या करोगे उससे, वो कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। अब फिर क्या होगा, द प्रॉब्लम विल बी इट विल नॉट लुक कोहेसिव। आपका रिसर्च किसी अलग डायरेक्शन में जाएगा, आपके स्ट्रैटेजीज किसी अलग डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। Then prioritize. I have talked about this n number of times. And why I am talking this n number of time? Because this is a personal mistake that I made. Initially, I used to think कि अगर मैं 5 सोल्यूशन दूंगा 5 अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर, कंपनी को बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ कितना स्मार्ट है, कितने सारे सोल्यूशंस दे दिए एक बार में। कंपनी को वो नहीं चाहिए, कंपनी को चाहिए आप दो चीज उठाओ, उसको अच्छे से इन डेप्थ जाके स्टडी करो, उसके ऊपर बहुत ही प्रैक्टिकल और फीजिबल सोल्यूशन दो। Right. They are not looking for generic gyan. They are looking for something that they can literally implement if they found that idea or find that idea feasible. Right. Then next part is recommend. Obviously, when you prioritize, then the next part comes up is recommendation, that now you recommend about your strategies that you are planning to build, or whatever the problem statement was, whatever your recommendations are, you recommend those. Right. And then the most important part comes into play, the presentation. Communicate very clearly, be it through your PPT or be it through your video or be it through you presenting your slides. Communicate very clearly whatever you have in your mind, because time specific रहेगा। आपको वीडियो बनानी होगी, वो भी 2.5 3 4 मिनट देंगे, आपको प्रेजेंट करना होगा, वो भी आपको 10 15 मिनट देंगे। कुछ जगह पे थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं, बट येस इट वुड बी अ टाइम बाउंड एक्सरसाइज। तो प्लीज बी वेरी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन, देन कीप द लॉजिक इजी टू फ्लो। समझ रहे हो इजी टू फ्लो क्या होगा? आप में से किसने हमारे सेशन में सुना है कि स्टोरी टेलिंग इज समथिंग यू शुड ऑलवेज फोकस अपॉन? Have you ever heard this in our AYN program or somewhere else in any other session, that please focus on storytelling, because storytelling builds a flow इन योर प्रेजेंटेशन, राइट। आपका रिसर्च फ्लो करना चाहिए आपके स्ट्रैटेजीज में से, ऐसा फोर्सफुल नहीं लगना चाहिए, राइट, कि मैंने एक रिसर्च करा है और अब मैं खींच खींच के चीजें ला रहा हूं टू पुल इन टू माई स्ट्रैटेजी। द रिसर्च शुड ऑटोमेटिकली शुड पॉइंट आउट अ क्वेश्चन कि इसके लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आपने प्लान करी है कि नहीं करी, राइट। अगर आपका ब्रांडिंग के लिए कोई केस कॉम्प आया है, तो योर रिसर्च शुड ऑटोमेटिकली पॉइंट टुवर्ड्स द स्ट्रैटेजी दैट यू आर ट्राइंग टू पिच। फिर वो मजा आएगा कि अच्छा हाँ हाँ भाई ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, नाउ प्लीज टेल अस हाउ शुड वी इम्प्लीमेंट। समझ रहे हो, इस तरीके का चलना चाहिए, वो पैसिवनेस नहीं रहना चाहिए उसमें कि बता दिया रिसर्च है ये अच्छा सर ये स्ट्रैटेजीज है मैम ये हमने कर ऐसे। नो, दिस विल नॉट हैपन। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐसा डेक होगा तो आपको प्रेजेंट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि
क्लियर नहीं होगा ना राउंड। राउंड तो तभी क्लियर होगा जब डेक में वो फ्लो होगा ऑटोमेटिक। एंश्योर recommendations फील प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल, एंड दैट इज व्हाई द फाइनेंशियल मॉडलिंग इन एवरीथिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि एक कंपनी के लिए फीजिबिलिटी इज ऑल अराउंड मैंने कितना पैसा लगाया, उससे मैं कितना पैसा बना पा रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। कोई ना कोई केपीआई पक्का होगा जहां आप कंपनी का पैसा लगवाओगे। आपने मतलब बोल दिया कि जाके ताजमहल के ऊपर ब्रांडिंग करो, अरे भाई प्रैक्टिकल रहो पहले तो। गिव अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एंड if your solution is practical, then tell what is the feasibility of it. Do that feasibility analysis if possible for you कि feasible है भी कि नहीं है, right? हो सकता है एक solution practical हो बट एक particular company के लिए feasible ना हो at that point of time, right? तो वो future plans में fall कर सकता है obviously, right? So is it clear? Do you have any doubt on this slide or should I move to the next slide? Right. तो अब if you consider this as a marketing slide, I'm glad about it. If you consider this as a knowledge transfer slide, again, I'm glad about it. But I have to present the reality that whatever we talked about in the last slide, we all were aligned that yes, this is the right thing to do. This is the right strategy to follow. What it focuses upon also हमने discuss कर लिया था. Now the ball is in your court. If you feel like you can build upon all of these competencies on your own, please go ahead with that. If not, there is a very good offering under the name CCC, जिसमें these all sessions are already planned, which will be taken by mentors who have literally had podium finishes last year or last year, and not in a single case multiple case competitions. So again, अब आप इसको जिस तरीके से परसीव करना चाहें कर सकते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी दैट वी हैव लिटरली मैप डाउन sessions across each and every key lever that can help you out to become, if not a master, a good competition while you participate in a case comp, right? And आप में से किसी ने ये रिसर्च करा है, हैव यू सीन दैट एक पॉइंट के बाद ना वो कॉमन 5-6 टीम होती है हर कॉलेज से जो हर केस को हम जीत रही होती है? कभी किसी ने, आप कोई भी कॉलेज का ना इंस्टाग्राम पेज खोल के देखना कभी, यू विल रियलाइज दिस पैटर्न दैट आफ्टर फ्यू मंथ्स नो देयर आर ऐसा स्पेसिफिक 6-7 टीम्स जो जीतती हैं मोस्टली केस कॉम्पिटिशंस. उसका रीजन पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं, उसका रीजन है कंसिस्टेंसी. वो जीतने के बाद ना उतने ही नंबर ऑफ केस कॉम्प्स में पार्टिसिपेट करते हैं जितना वो पहले करते थे. उनका विनिंग रेशियो अभी भी कम है. द कंसिस्टेंसी इज देयर. दैट इज द ओनली डिफरेंस. लोगों को लगता है, मतलब आपने शायद सुना होगा कुछ लोगों से कि दे हैव क्रैक्ड द फॉर्मूला टू सॉर्ट ऑफ बैक द केस कॉम्पिटिशन. नो, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड द रियलिटी कि दिस इज अ वेरी टाइन. एक केस कॉम निकाल रहा है, बाकी लोग तो नहीं निकाल पा रहे, इनको पक्का समझ आ गया कि कैसे निकलता है केस कॉम. ऐसा नहीं. हेलो, कैन एनीवन कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल? Sorry for this interruption, but please confirm. Thank you. And if you have confirmed this again, can you tell me are we on the same page or not, so that we can move to the next slide very quickly? चलेगा. ठीक है. So that was the first thing that I wanted to talk about कि now we have understood what are the key levers, how Prep has mapped out good number of sessions parallel to every respective key levers. But again, you know what is the problem? आप जब किसी सेशन में जाओगे ना, मैंने आपको सिखा दिया है सेशन में. इस सेशन को मैं 2 घंटे भी ले लेता तो एक ही टॉपिक के अंडर ये एक सेशन बन जाता. बट आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन जो आपको झूठ चीजें सेल करे. आप कितने ही सेशन देख लो, वो आपको जेनरिक अंडरस्टैंडिंग देंगे. वो आपको कभी इस लेवल पे ट्रेन नहीं कर सकते कि, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी रैंडम ने प्रियोदित का नाम उठाता हूँ, राइट? ऐसा नहीं होगा, मैं कभी ऐसा बोलूंगा भी नहीं कि आपने वो 22 सेशन देख लिए, अब आप कल से सारे केस को हम फोड़ दोगे.
हर केस कॉम स्पेसिफिक एक स्टोरी लाइन होती है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि अगर XYZ कंपनी का केस कंपटीशन है, सो व्हाट इज स्पेसिफिक टू दैट केस कंपटीशन, व्हाट इज looked upon when we see that case competition? क्या इसके लिए स्ट्रैटेजी कुछ अलग होती है कि नहीं होती? इसका सेक्टर बहुत अलग है, ये अभी नया है बिजनेस में, दिस मार्केट इज वेरी मच इवॉल्व। सो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग अलग होगा कि सेम रहेगा? डोंट यू थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? एंड दिस इज द नेक्स्ट लेयर। जब आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं, व्हेन यू हैव ऑल दोज लीवर्स दैट वी डिस्कस्ड आर ऑन प्लेस, इसके ऊपर ये एक टॉप लेयर आना चाहिए that will give uniqueness to your preparation, that will give a added advantage to your preparation. Don't you think this is important? Right. तो ठीक है, एंड यू नो व्हाट इज द ओनली वे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ इनसाइट्स? वो लिंक्डइन पे ही रीच आउट करते हैं। आप लोगों ने भी ट्राई करा होगा, पीपल हु आर सीरियस फॉर कोलगेट। यार देखो, या तो आप लिंक्डइन पे रीच आउट करो, या फिर इफ यू हैव अ कम्युनिटी जहाँ पे आप पार्ट हो, जहाँ पे यू आर हर्ड, आप वहां पे अपने लोगों से यू कैन आस्क की कैन यू प्रोवाइड दिस सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एंड एवरीथिंग, राइट? लाइक अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग इन प्रेप बी कम्युनिटी ऑल्सो की कोलगेट का हो सकता है क्या, HUL का हो सकता है क्या, राइट? सो अदर अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते? आप लिंक्डइन पे ही रीच आउट करते। एंड दिस इज अ वेरी ब्रूटल ऑन रियलिटी दैट लिंक्डइन पे कन्वर्जन इज वेरी लो। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप लिंक्डइन पे 15-20 लोगों को रीच आउट करोगे तो शायद वो कोई उसमें से एक दो लोग आपको हेल्प आउट करने के लिए रेडी होंगे। एंड नाउ कमिंग बैक टू द नंबर ऑफ केस कंपटीशन दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज 10 ले लो चलो। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि ये तो आपके लिए एक अलग एक्सरसाइज ही हो गई कि हर रोज अब आपको ऐसा कोल्ड रीच आउट ही करना है लिंक्डइन पे, ताकि यू कैन गेट दैट इनसाइट। Otherwise, you can do on your own also. If you don't think कि भाई I can manage on my own, that is also a very good thing, and a lot of people do that as well, right? But to help you out with that whole burdensome exercise, we organize case forums, right? And we have already organized first session for the case forums this year. That was around Colgate Inner Circle, where we had opportunity getter in Colgate Inner Circle from last year, I guess. हाँ, last to last year, right? तो वही है, last year या last to last year, that we can check. But yes, definitely that was there. And आप लास्ट ईयर जाओगे तो इट वाज अंडर द सीरीज केस लैब्स, बट वी ऑर्गेनाइज्ड गुड नंबर ऑफ सेशंस अराउंड डिफरेंट केस कॉम्स, बी इट कंसल्टिंग केस कॉम्स, बी इट फार्मा केस कॉम्स। अलग अलग केस कॉम्स के अराउंड वी हैव हैड गुड सेशंस। मारुति का केस कॉम पहली बार आया था लास्ट ईयर, मारुति एक्सट्रीम करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वी वर नॉट हैविंग समवन जो पोडियम फिनिशर था, सो वी गॉट अ पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री हु इज वर्किंग इन मारुति, एंड द पर्सन सॉर्ट ऑफ हेल्प द क्राउड कि ठीक है भाई, दिस कुड बी अ पॉसिबल थिंग। इफ नॉट एनीथिंग एल्स, वी हैव आर एक्सपर्ट मेंटोर्स जो केस ब्रेक डाउन तो आपको अच्छे से करके एटलीस्ट समझा सकते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट गो अहेड स्ट्रैटेजी फॉर दिस, राइट? सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, एंड आई वुड से कि ये मैं चाहता था कि चले, बिकॉज आई हैव सीन इन माई बैच, आई हैव माई सेल्फ डन दिस, कि रीचिंग आउट ऑन लिंक्डइन इज अ वेरी बिग headache for everyone, and it is very difficult to get responses. देन थर्ड थिंग, दिस इज अ वेरी मच गिवन थिंग कि पिच डेक रिव्यू होना ही चाहिए। मतलब मैं बना रहा हूँ, after I have built a deck for 10 days, I would obviously like that deck. And if not like that deck, I would not be able to find the problems in that deck because I have built it also. So I need some expert opinion. So ये आप अपने कॉलेज के सीनियर से भी obviously करवा सकते हो। If you find someone जो help कर सकता है उस सेंस में, if you find someone who can help you out, who is that competent, a very important word, that competent, you please take help from them. प्लीज 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 रिव्यू पे फोकस करना, 2 या 3 रिव्यू, एटलीस्ट एक, 2 या 3 रिव्यू इफ यू आर इन फाइनल और सेमीफाइनल राउंड, बट फॉर फर्स्ट राउंड ऑल्सो एटलीस्ट एक रिव्यू ट्राई करना आपका डेक का हो जाए, राइट? आर वी ऑन द सेम पेज? मतलब इस पे तो क्या ही सेम पेज। ठीक है। सो this is, I think so, one of the last slides, that what are the common mistakes one should avoid. And this is not an exhaustive list, obviously there could be personal mistakes one can do, but these are most common mistakes that one does and should be avoided. Jumping to solution too early.
कभी नहीं होना चाहिए। 1 से 1.5 दिन तो आप खाली प्रॉब्लम ब्रेकडाउन पे ही लगाएंगे, एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज, जब तक आपको नहीं वो प्रैक्टिस हो जाती कि आप 2 घंटे के अंदर पूरा प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड मैनर में ब्रेक कर पा रहे हो। आप एक दिन प्लीज अच्छे से लगाइए टू जस्ट टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम, अब आपने बहुत सीधा सोल्यूशन पे आ गए हो तो आप ऑब्वियसली हो सकता है कि आप गलत ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ट्राइंग टू इंक्लूड टू मेनी आइडियाज, यस दैट इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक। वीक प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिकमेंडेशंस, कि आपने 5 दे दिए हैं रिकमेंडेशन, बट आपने ये नहीं बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, सेकंड पे क्या है, करंट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, फ्यूचर टेक अवेज क्या होने चाहिए, राइट? तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर नैरेटिव फ्लो फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, राइट? तो वो होता है, बट वो इवेंचुअली यू विल बिल्ड अपॉन, धीरे धीरे जैसे यू बिल्ड अपॉन डिफरेंट डेक्स, आपको उस चीज का हैबिट हो जाएगा, राइट? देन जेनरिक बिजनेस सजेशंस, तो ये तो खैर अगर कोई चैट जीपीटी के भरोसे है तो यही होने वाला है, तो इसमें डोंट हैव टू टॉक अ लॉट। देन अट्रैक्टिव स्लाइड्स बट वीक लॉजिक, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है मैं बहुत सुंदर पीपीटी बना दूंगा और मेरा केस कॉम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एज सुन एज आप, हो सकता है 1-2 राउंड आप जरूर निकाल दो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है सुंदर पीपीटी से आप 1-2 राउंड जरूर निकाल दो, बिकॉज if they are just glancing through the PPTs and ideas and everything, हो सकता है your PPT stands out, you clear out that those rounds, but as soon as discussion round पे आप आ गए, as soon as Q&A आ गया, तब you are up from that round, right? Cool. ठीक है, so till now, does everything that we talked about made sense to you? Anything you would want to contradict upon or say कि नहीं 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 ऐसा कुछ वैसा कुछ, anything? Right. So as I said that towards the end we can do a very small exercise, जितना भी we have discussed upon उससे at least this is something that we can practice upon. So any volunteers who would want to come, and I just want to know that solution नहीं चाहिए, obviously that is something I am very clear upon. I have given you a problem statement, I just want to understand how will you approach this problem, and वो approach कैसा दिखेगा, just this much. Any 1 or 2 people who would want to come off mute and volunteer, you are most welcome. Otherwise, I'll jump to the solution directly. एटलीस्ट राइट नो होना, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊं, आई विल नॉट वेट फॉर एनीवन। यस, वेदांत प्लीज। यस यस, यू कैन अनम्यूट। Hello. यस, हाय वेदांत, प्लीज टेल मी। Yeah, yeah. So if it's a D2C brand, but it has low conversion, that maybe the marketing that it is doing is not lining up uh, with the website and what the features of the product actually are. So we can try to see what the marketing, what the general marketing it is doing actually to bring the people on the website at the first place, and if it's actually aligned with the product itself. Uh, because if the conversions are not there,
then people are being impressed by the general marketing that is being done and coming to the website. But after coming to the website, they are either realizing that they don't want the product, or they are realizing something else. Because if they are on the website, then that automatically means that they have some interest in the product. Otherwise, they would have just seen the marketing and ignored it, right? They would not have uh, clicked on the website. Okay. And from where is this all these pointers coming? Like, do you have any experience in this space, or like, do you read upon a lot? Because how are you getting these ideas? I don't really have any experience or anything. I'm just Hmm. thinking logically, like if Hmm. someone is if I will actually click on the website, then that means I will have to have some interest. I will have to have seen some ad before of the product. Hmm. And then if I'm not actually buying the product, maybe the ad that I saw was not actually what I envisioned in my mind of the product itself. Sure. Thank you. Anyone else? Yes, Protham, please. I would also like to do some research about what the competitors are offering. There might be some disadvantages on that front. Hmm. Maybe some competitors are offering lower prices or better deals, which this brand is not offering. Maybe the quality of the products are good enough. That's why it's attracting a lot of traffic. But once they are Hmm. checking the prices or certain deals, they are realizing that I am getting better deals or better prices somewhere else, which results in lower conversion. So that can be one reason as well. Sure. Anyone else? I have read this comment by YG as well. That is related to price point outside acceptable affordable range. SEO is done right, but marketing start with breaking down channels through which website traffic is coming in, then explore user journey for each one. ठीक है, Ria, thank you for bringing in this point. At least it is somewhat aligned with what should one do, right? मतलब अब आपने अपने सामने देख लिया है कि इट वाज डिस्कस्ड इन कंप्लीट सेशन कि पहले सबसे आप प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करेंगे, एंड while you were thinking that you are breaking down a problem or discussing a problem, it was coming from your personal bias. चाहे आप उसको लॉजिक बोलिए, चाहे आप उसको प्रायर अंडरस्टैंडिंग बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करना शुरू ही नहीं हुआ। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव तो होता कि मैं देखूंगा सब कुछ, फिर मेरे को सब कुछ देखने के बाद जो प्रॉब्लम दिखेगी उस पे आई विल बिल्ड अपॉन द स्ट्रैटेजी। आप शुरू ही कुछ स्पेसिफिक से कर रहे हो, तो इट इज अ गिवन फैक्ट दैट इट हैज बीन स्टार्टेड और इनिशिएटेड बाय सम assumptions. You can call it out as logic, you can call it out as something else, but again it is based on some assumptions coming from some biases, राइट? हमको यही चीज खत्म करनी है, एंड हम एज ह्यूमंस ये चीज नहीं खत्म कर पाएंगे, इसलिए कुछ फ्रेमवर्क्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। आई हैव टॉक्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट मीसी फ्रेमवर्क। मीसी फ्रेमवर्क ले लो, फिश बोन डायग्राम ले लो, कुछ भी ले लो, बट यूज अ फ्रेमवर्क टू ब्रेक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब तक आपकी हैबिट नहीं बन जाती है टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ भी कर लूं मेरे बायसेस आएंगे ही आएंगे, देन यूज फ्रेमवर्क्स, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी सरफेस लेवल ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग। ये शायद 10 मिनट का काम है, आपको मैंने बोला 2-3 घंटे कम से कम लगाइए जब भी आपको आप ऐसे किसी सिचुएशन में आते, बट यू स्टार्ट विद आस्किंग द वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? नेवर start this particular approach with a assumption, always start with द बेसिक क्वेश्चंस, है ना? और ट्राई टू ब्रेक एवरीथिंग इनटू फॉर्मूलाज कि भाई कन्वर्जन रेट का पहले तो बताओ फॉर्मूला होता क्या है ना? लो कन्वर्जन रेट ही तो है ना, तो कुछ तो फॉर्मूला होता होगा जो इंडस्ट्री वाइज यूज होता होगा। उस फॉर्मूला को अगेन ब्रेक डाउन करने का ट्राई करो कि अच्छा लो कन्वर्जन रेट है तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, राइट? तो उससे या तो आप चीजें ब्रेक डाउन करिए, नहीं करेंगे उस तरीके से तो इस तरीके से ट्राई टू आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चन, इज द राइट कस्टमर रीचिंग द वेबसाइट और नॉट, राइट?
अब जो आप बोल रहे थे ना, आप डेफिनेटली आप बोलेंगे कि वी वर ऑल्सो सेइंग सेम थिंग, यू वर गिविंग आंसर टू दिस। आप पहले क्वेश्चंस तो लिस्ट डाउन करिए, देन वी विल फाइंड द आंसर फॉर दिस कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वी कांट गो विद assumption कि वो वेबसाइट पे आ रहा है तो मार्केटिंग इज डन राइट, दैट इज डन राइट। भाई प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत से लोग हैं जो बस क्लिक कर देते हैं, राइट। आप अपनी जनरेशन को मत दिमाग में रखिए। वी डोंट इवन नो व्हाट इज दिस D2C ब्रांड डूइंग, इज इट इवन टारगेटिंग जेनजीज और मिलेनियल्स और बूम, राइट। तो हमको कुछ पता ही नहीं है, हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं तो यही हो रहा होगा, राइट। सो राइट, सो आंचल सी, फर्स्टली तो ये एक सेंटेंस का प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा आपको मिलेगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस, राइट। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, कि इज द राइट कस्टमर रीचिंग द वेबसाइट और नॉट। यही है ना कि आप या तो क्या कर सकते हैं कि अगर कंपनी के लिए ये डेटा रेलेवेंट होगा, जैसे आईटीसी वगैरह ये करती है, बहुत से कंपनीज करते हैं, वो ये डेटा ऑलरेडी देते हैं अपने केसेस में। इट इज नॉट जस्ट टेक्स्ट बेस्ड केसलेट्स, इट दे आल्सो गिव यू डेटा इन सम एनेक्शर्स, राइट। तो अगर इंपॉर्टेंट होगा तो डेटा एनेक्शर में भी दिया होगा, इफ नॉट आप प्राइमरी रिसर्च कर सकते हो, राइट। कि आप ऐसा 500-600 लोगों का एक सेट बनाओ जिनसे आप गूगल फॉर्म में कुछ भी आप फिल करवा सकते हो, जिससे आपको समझ आएगा कि अगर आपको समझ आ गया कि ठीक है भाई 600 लोग हैं, इन 600 लोग में से इतने लोग हैव विजिटेड द वेबसाइट, इतने लोग हैव नॉट विजिटेड द वेबसाइट, राइट। तो ऑब्वियसली उसके लिए मार्केट साइजिंग, मार्केट रिसर्च, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इनटू प्ले। वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में समझा दूं कि क्या हो सकता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इनटू प्ले। यू हैव टू बिल्ड सर्टेन हाइपोथेसिस, यू हैव टू डू द मार्केट साइजिंग, यू हैव टू डू द मार्केट रिसर्च, प्राइमरी सेकेंडरी जो होता है, देन यू हैव टू एनालाइज द डेटा। दैट इज अ वेरी बिग एक्सरसाइज दैट नीड्स टू बी डन, राइट। देन इज द प्राइसिंग क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन, ये तो आप पता कर सकते हो। आप राइट टारगेट ऑडियंस अगर आइडेंटिफाई कर चुके हो तो हैव इंटरैक्शन विद दोस टारगेट ऑडियंस ना, कि आपके हिसाब से क्या ये प्राइस पॉइंट सही है। डू यू फाइंड इट, जैसे जब मैं गैल्डर्मा का केस फॉर्म कर रहा था, तो सिटाफिल वाज द ब्रांड दैट वाज गिवन इन द केसलेट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, है ना। तो अब आप लोग बताइए, चलो सिटाफिल महंगा लगता है आपको कि सस्ता लगता है, कि क्या लगता है, मतलब सिटाफिल इज एक्सपेंसिव, इज इट अफोर्डेबल, इट इज, हाउ डू यू फील इट इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, राइट। नहीं, प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट इज पोजिशनिंग एफशा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, डोंट कंफ्यूज बिटवीन टू। अब मैं एक बात बताऊं आपको, आप सब लोग अब एमबीए कर लोगे 2 साल, आप महीने के जब 2-2 लाख रुपए कमाओगे ना, आप इस आंसर को कभी एक्सपेंसिव नहीं बोलोगे, यू विल से कि भाई अफोर्डेबल है भाई, कोई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पूरे पूरे साल में यूज कर सकते हो सेटाफिल। समझ रहे हो? तो वही है कि हमको अपने बायसेस नहीं देखने, हमको एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कंडक्ट करनी ही पड़ेगी टू गेट इनसाइट्स, राइट। आप समझिए कि जिन लोगों को स्किन इश्यूज है ना, जिन जिन लोगों को स्किन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए सेटाफिल इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ब्रांड इन दैट लीग, एज तुषार मेंशन, कि जो उस लीग में ब्रांड्स आते हैं उसमें शायद सेटाफिल सही प्लेस्ड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू सी व्हाट इज द प्राइस पॉइंट पर यूसेज या प्राइस पॉइंट पर ग्रामेज, तो देन यू विल रियलाइज कि ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? तो इसलिए अपने बायसेस से यू हैव टू कम आउट एंड यू हैव टू डू इंडिपेंडेंट रिसर्च, और वो इंडिपेंडेंट रिसर्च आप तभी करेंगे जब आप पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ब्रेक डाउन कर लेंगे, राइट। अब आप, अगर आपको, आप ये पहले ही अज्यूम कर लेते कि नहीं भाई सेटाफिल तो देख महंगा है, ये तो प्रॉब्लम है ही है, अब मैं उनको सजेस्ट करता हूँ आप अपना प्रोडक्ट सस्ता करो। भाई अगर उन्हें सस्ता करना होता वो पहले ही सस्ता कर लेते। डोंट यू थिंक दे हैव अ कोर मार्केटिंग टीम जो प्राइस पॉइंट बहुत अच्छे से देखती होगी, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग करती होगी, सब करती होगी? ऑब्वियसली होगा ना। अगर अगर सस्ता करना ही सोल्यूशन होता तो वो कर चुके होते। ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स एंड समथिंग यूनिक। देन इज द प्रोडक्ट प्रोपोजिशन क्लियर इनफ? क्या प्रोडक्ट, अब ब्रांड ने बता दिया कि हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, यू आस्क फ्रॉम द कंज्यूमर्स नो कि आर यू परसीविंग द प्रोडक्ट सेम एज द ब्रांड इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इट, राइट। सिटाफिल के लिए जैसे क्या प्रॉब्लम थी कि
उन्होंने क्योंकि सेंसिटिव डर्माट ये सब इतना ज्यादा कर दिया था ना, तो अब लोगों को लगता था, दो सिटाफिल इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन नाइका, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर कॉस्मेटिक स्टोर्स एवरीवेयर, बट अब लोगों को लगता था कि सिटाफिल का मेन चैनल इज मेडिकल स्टोर बिकॉज इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड प्रोडक्ट, राइट? अगर कोई प्रिस्क्राइब करेगा तो शायद मैं सिटाफिल बाय करूंगा, राइट? तो वो परसेप्शन चेंज धीरे 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 करने की जरूरत उस ब्रांड को दिख रही थी, राइट? तो हम अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रिसर्च कंडक्ट करेंगे। करने के लिए अगेन वी हैव टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। ऐसे ही और चीजें, इज देयर अ चेकआउट और अ ट्रस्ट इशू, और इज देयर अ प्रॉब्लम इन ट्रैफिक क्वालिटी और कन्वर्जन क्वालिटी, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज जस्ट अ इंडिकेटिव लिस्ट, बहुत सारी चीजें हो सकती है। व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू बाय दिस एक्सरसाइज इज दैट हम कितना ही सोच ले दैट वी आर बीइंग अनबायस्ड, वी आर नॉट यूजिंग आवर assumptions, until and unless we list down all the possible problems and identify solution with a very neutral approach, वो neutral mostly नहीं हो सकता, right? So I end this session over here, I feel and I hope कि आपको थोड़ा हेल्प हुआ होगा from this session, you got a little more clarity on how case comps are done, what are the case comps, everything, but ठीक है, towards end I would just say thank you and please take case comp seriously before you join B school, once you join B school, and would love to see you all winning a lot of case comps. Right? So, do you have any doubts or something, or we can just end the session? So, please just let me know. If not, if no doubts, please write no doubts. कुछ तो बहुत ही बड़ा डाउट है। I am a BCom graduate with knowledge of financial markets. How should I approach making a team before the case competition? Like I believe a team should have different qualities, like one having understanding of finance, one good at marketing, presentation, and other qualities. I personally don't think प्रांजल इन दिस सेंस, बिकॉज देखो मैंने मतलब ये जो आपका माइंडसेट है ना, एग्जैक्ट सेम माइंडसेट के साथ I made my first team जिसमें I had one person from HR, one from finance, and I was from sales and marketing. But the team that with which I won Galderma case competition was तीनों people coming from sales and marketing. तो ऐसा नहीं है, if you need help in some sense तो आप ले सकते हो, obviously there are external helping hands also, but टीम वो होनी चाहिए जो तगड़ी हो, बस मतलब बंदे तगड़े होने चाहिए irrespective of domain। उनमें मतलब वो ना अंदर से आना चाहिए कि भाई केस को हम फोड़ना है, मतलब ये अगर आपको दिख रहा है किसी बंदे में, इररिस्पेक्टिव ऑफ डोमेन ले लो, इवेंचुअली सब फिगर आउट कर लेंगे, ना आप एक्सपर्ट हो, ना हम एक्सपर्ट है, ना कोई एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपर्टीज तो डाउन द लाइन बिल्ड होगी, बस वो कंसिस्टेंसी वाला की फिगर अगर आपको दिख रहा है कि ये बंदा बंदी वो कंसिस्टेंसी मेरे साथ शो कर सकता है, स्टार्ट वर्किंग विद देम, दैट इज द ओनली सजेशन आई हैव। कोहेशन तो देखो ऐसा है कि व्हेन यू विल वर्क इन द टीम तो लड़ाइयाँ होगी ही होंगी, बहुत ज्यादा होंगी एट सम पॉइंट, इतने सारे सबमिशन से वो है, बट यस आपका सबमिशन उससे ट्रिगर या उसका क्वालिटी उससे हैम्पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर गुड टू गो। हाँ, टीम मेंबर सेम भी स्कूल से ही होने चाहिए। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? व्हाट इफ मेंबर्स स्टार्ट डिचिंग? हाँ, तो अगले केस भाई ये तो बहुत कॉमन है, मतलब आंचल आई डोंट नो आपने किसी से सुना है या खुद ही एज्यूम करा है कि ऐसा हो सकता है, बट ये बहुत कॉमन है, ऐसा होता भी है। तो इफ दैट हैपेंस यू स्विच योर टीम, हिट एंड ट्रायल से ही अच्छी टीम बनती है, दैट इज व्हाट आई कैन से। इन द बी स्कूल द केस कम entirely इज a student task or are there seniors and professors for guidance? देखो, if you reach out to some professors they can guide you, but again this is my personal experience that प्रोफेसर्स का ना डिफरेंट बिजनेसेस को लेके थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर हो सकता है, बिकॉज दे हैव बीन टीचिंग देयर करिकुलम सिंस पास्ट ईयर, तो वो चीज है। फिर सीनियर्स गाइडेंस आपको तब तक देंगे, देखो सीनियर का मैं बहुत ऑनेस्टली बहुत प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ, अगर किसी सीनियर के पास पीपीओ है
तब तो वो आपको गाइडेंस दे देगा। अगर उसके पास पीपीओ नहीं है तो वो पहले अपनी लंका बचाएगा ना आपकी खड़ी करने से पहले। तो फिर वो गाइडेंस मुश्किल ही है कि देगा, राइट? तो शुरू के कुछ महीने जब तक सब वेट कर रहे होते हैं पीपीओ का, तब तक गाइडेंस मिल सकती है, बट पोस्ट दैट फिर तो वो बेचारा बेचारी अपने पीपीओ के जुगाड़ में लगेगा, फिर तो वो नहीं मतलब करेगा इतना। बट स्टिल मतलब हेल्पिंग हैंड्स रहता है, बट ऐसा नहीं है कि जब आपको चाहिए तो होगा ही होगा, कंप्लीटली ऑन द सीनियर्स डिस्क्रिप्शन। नहीं भाई, मैं डिच हुआ ही। हाउ टू join a case competition because how to join a case competition because I still haven't converted a B school. So if you haven't converted a B school then probably you have to wait। मतलब I'm not sure अभी जो केस कॉम्प आए हैं, क्योंकि सीआईसी का फॉर्म मैंने देखा था उसमें तो they were asking for B schools or something, right? हाँ, इन मेनी ऑफ द केस कॉम्स आंचल दिस हैपेंस। एंड जिस गैल्डरमा वाले में क्या कहते हैं हम जीते थे, तो माय ऑब्वियसली माय जूनियर बैच वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन सेम केस कंपटीशन। तो मैं उनको जाके थोड़ी हेल्प करने वाला हूँ कि आ जाओ तुम्हें भी गाइड कर देता हूँ और खुद अपनी भी पीपीटी बना लेता हूँ। तो जब ऐसा था कि अब मेरे को खुद केस कॉम्स जीतने हैं, तो मैं तो फिर क्यों किसी की हेल्प करूंगा। डिस्टिंक्शंस बिटवीन सीसी बेसिक प्लस प्रो। यस आई कैन डू दैट। मैं इसी में बता देता हूँ आपको, एक सेकंड देना बस। देखो, तो इन ऑल ऑफ दीज सेशंस ना, अब आपको वो लिस्ट चाहिए कि बेसिक और एडवांस के अंदर कौन कौन से आते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जितने डोमेन वाइज आपको स्पेसिफिक केस फॉर्म्स मिल रहे हैं ना, एज आई सेड कि आपने जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया है, बट नाउ यू वांट डोमेन स्पेसिफिक। जैसे कोई फाइनेंस में अभी था कि आई वाज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, तो कौन था वो, कौन था? हाँ, प्रांजल। सो प्रांजल, आर यू देयर अभी इन द मीटिंग? यस। सो प्रांजल, डू यू नो दैट सीएफए के अपने केस कॉम्स भी होते हैं, सीएफए एथिक्स चैलेंज एंड सीएफए रिसर्च चैलेंज। हैव यू हर्ड ऑफ दीज? यस, परफेक्ट। ये बहुत अच्छी चीज है, आपको पता है ये बहुत अच्छी चीज है, राइट? तो अब आप समझिए कि जितना बेसिक लेवल पे आपने अंडरस्टैंडिंग लिया है ना, वो सीएफए स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग अभी भी मिसिंग है। तो उसके लिए आपको वो सपोर्ट चाहिए जो सीएफए रिसर्च या सीएफए एथिक्स वाला बंदा जीता हो। तो जैसे इन फाइनेंस केस कंपटीशन वाला जो लिखा हुआ है इसमें एक सेशन, उसमें आई हैव अ पर्सन जो सीएफए रिसर्च और सीएफए एथिक्स में फाइनलिस्ट और पोडियम्स पे रहा है, एंड ऑल्सो हैव पार्टिसिपेटेड इन अदर फाइनेंस केस फॉर्म्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। तो उसकी एक्सपर्टीज वहां पे है, तो राइट। तो बेसिक मतलब एज द नेम सजेस्ट इट विल गिव यू अ बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस कॉम्पिटिशन कि हाँ भाई, नाउ आई एम इक्विप्ड टू पार्टिसिपेट इन अ केस कॉम। बट इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पेसिफिक डोमेन बेस्ड केस कंपटीशन देन वो प्लस में आता है, क्योंकि सारे डोमेन स्पेसिफिक जो सेशन है, कंसल्ट का अलग है, प्रॉड का अलग है, फिन का अलग है, एसएनएम का अलग है, वो फिर प्लस में आता है, राइट? अब आप बोलोगे ठीक है भाई, जब मैंने दोनों चीजें सीख ली हैं यहाँ पे, फिर प्रो का क्या डिफरेंस बचेगा? प्रो का ओनली डिफरेंस इज दैट दिस एक्सपीरियंस बेस्ड जो आपको पिच डेक रिव्यू मिलेगा, दैट इज जस्ट इन प्रो। ये सिंपल डिफरेंस है। और ये जो केस फोरम्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप हो नहीं हो जो भी है, ये हेल्पिंग हैंड तो प्रेबी की तरफ से एनी विच वेज है ही। तो उसमें अपन लोग कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे। आई हैव मतलब, प्रखर, व्हाट डू वी मीन बाय आई हैव? he told in response to CFA। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, कूल। कूल, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। Yes, apart from Colgate Inner Circle, there is HUL Foundation and there is one RPG also. Priyodit, if you are here, you can tell the exact name of that RPG case comp, please. Would be there throughout the two. नहीं, so this case competition course ends after 31st March 20, मतलब on 31st March 2027, तो तब तक है। उसके बाद तो नहीं है, मतलब एक साल की है ड्यूरेशन इस कोर्स की। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि रजिस्ट्रेशन ओपन है कि नहीं? मतलब रजिस्ट्रेशन का आई एम नॉट 100% श्योर, आई एम नॉट ट्रैकिंग द रजिस्ट्रेशन डेट्स, बट
चल रहा है, मतलब उसमें कुछ कुछ, ये मैं बोल रहा हूँ, तो लाइव है वो, बेसिकली रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, इफ एनीथिंग एल्स कम्स अप इट यू विल बी इन्फॉर्म्ड इन द ग्रुप, यू डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोगों को वैसे ऑब्वियसली पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से, एवरी वन ऑफ यू आर वेरी शार्प इन दैट केस, बट शॉर्टलिस्ट कैसे हो पाए फॉर केस कॉम्स? यार वो पूरा सेशन ही उसके ऊपर था, शॉर्टलिस्ट कैसे हो पाएगा वैसे, ऐसे तो मत बोलो। पूरा सेशन ही लिटरली उसके ऊपर था, लाइक इन द फर्स्ट स्टेज। व्हाट, सी फर्स्ट स्टेज तो डिफर्स फ्रॉम केस कॉम टू केस कॉम। आप के केस में फर्स्ट केस क्या है, मतलब इज इट अ वीडियो राउंड है कि क्या वो प्रोफाइल बेस्ड राउंड है, कि गेमिफाइड राउंड है, कि क्विज है, कि एप्टी है, या कंपनी का कोई अपना क्विज है, ब्रांड क्विज है, ऐसा कुछ? तो व्हाट इज द फर्स्ट राउंड इन योर केस? एंड सी साहिब, आई बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये जो फर्स्ट राउंड है ना, ये ही सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। मतलब ये क्लियर हो गया ना, तो नाउ यू स्टिल एटलीस्ट नो कि अब मेरे को क्या क्या करना है टू विन, या टू व्हाट इज द राइट स्टेप्स आई शुड टेक। बट फर्स्ट राउंड में क्विज में कौन जीत रहा है, कौन सा, सब लोग चैट जीपीटी करेंगे मोस्टली। सब लोग इधर उधर से कुछ 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 करेंगे, कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोगों को नहीं आएगा। तो प्रोफाइल बेस्ड है, तो वो तो प्रोफाइल अच्छी होगी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसमें तो यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन जस्ट बिल्ड योर प्रोफाइल। उसके ऊपर कल का सेशन था ही पूरा, हाउ टू बिल्ड अ गुड प्रोफाइल, वो आप देख सकते हैं। ठीक है यार, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।